Assalamu alaikum, everyone. I hope you guys are all well. So we are resuming with our past paper session for O-level maths. We're done with a number of papers already earlier. You can find the link for that playlist in the description below. But today we are going to start with this paper, November 2021, paper 2, variant 1. Okay, this is the paper that we're doing today. You can also find a lot of other helpful content on O-level maths in the description below. For example, as I said, you have this yearly past papers playlist. जिसमें आपको 2016 onward बहुत सारे paper 2s के solutions आपको वहाँ पे मिल जाएंगे. Then you have detailed videos on most of the major topics like transformations, vectors, sequences, trigonometry, graphs of functions, mensuration, and so on. You can find the links for all of those videos in the description below as well. आपको वो सारी information यहाँ पे नीचे सारी links आपको description में मिल जाएंगे. ठीक है? So in this session, we're going to be doing this paper, November 2021, paper 2, variant 1. Let's begin with this. All right, so it says, in October, Sarah is charged $84.25 for water. A tax of 8% is added to this amount. We need to calculate the total amount Sarah is charged for water in October, including tax. Okay, so 84.25 is the original amount. A tax of 8% is added. So अगर original amount हम कहें 100% थी, तो उसमें कितना add हो गया? 8% add हो गया. All you have to do is just add 8% of 84.25 to this original amount. Now, there's one way to do it like this. Okay, 84.25 plus 84.25 multiplied by 8 over 100. This is one way of doing this. Another way of doing this directly is, आपको पता है 100% plus 8% कितना आएगा? It's going to be 108%. Right, which is 108 over 100. So इसको करने का एक डायरेक्ट तरीका ये भी हो सकता था, हम कहते हैं 84.25 into 108 divided by 100, and that will give you the same result as well. आप दोनों में से किसी भी तरह कर सकते हैं. Let's evaluate this and see what this turns out to be. 84.25 into 108, or 1.08 in fact, that's given me 90.99. So that's the solution that we get from this. $90.99. Part B, it says the table shows the rates that Sarah is charged for her gas and electricity supply. She is charged a fixed amount each day plus an amount for each unit used. Sarah uses a total of 960 units of gas in the 30 days of November. Calculate the total amount in dollars Sarah is charged for gas in November. Okay, so how is she paying this amount? She's charged a fixed amount each day. Okay, so every day she's charged some fixed amount. ये यहाँ पे आपको मिल रही है. उसके बाद फिर कहा है she's also charged an amount for each unit used. तो हर जो unit use होएगा उसकी कुछ additional amount charge हो रही है. Okay, अब हमें क्या करना है? We are told that she uses 960 units of gas in 30 days of November. We need to calculate the total bill that she would be getting. Okay, अब देखें 30 days है, उसकी कोई fixed cost है. We're talking about gas, right? उसकी fixed cost कितनी है? 23 cents for one day. So what we can do is we can say for 30 days, she's paying $23 cents daily for this under this fixed cost. ठीक है, तो per day जो उसको pay करना पड़े, इतना pay करना पड़े 30 into 23. But then she's using 960 units. हर unit का कितनी cost है? हर unit की cost कितनी है? 4.3 units. हम उसमें add $30 into 23 plus 960 into 4.3. And that is giving me 4818. Remember, this is in cents. उसने cents में ये amounts दी हुई हैं. So this is 4818 cents.
Now we need our answer in dollars. उसको डॉलर्स में कैसे लिखेंगे? $1 has 100 cents. तो ये डॉलर अमाउंट आपकी बन जाएगी $48.18. That's your final result that you get from this. All right, let's move on. Part 2. It says Sarah is charged a total of $30.8 for electricity in the 30 days of November. Calculate the total units of electricity she used. अब देखिए उसने आपको टोटल बिल दे दिया है यहाँ पे, उसने आपको टोटल बिल बता दिया इलेक्ट्रिसिटी का इन द 30 डेज ऑफ नवंबर. हमें फाइंड करने हैं कि यूनिट्स कितने उसने यूज किया. अब देखिए एक तो फिक्स्ड कॉस्ट है, एक आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है डेली, ठीक है, और फिर कुछ कॉस्ट है जो यूनिट्स पे डिपेंड करती है. तो फिक्स्ड कॉस्ट कितनी होगी 30 डेज की? वी नो फॉर इलेक्ट्रिसिटी वी आर पेइंग 28 cents पर डे, राइट? 28 cents पर डे. सो दैट इज गोइंग टू बी 30 into 28. फिक्स्ड कॉस्ट तो हमारे पास यहां से आ गई, ठीक है. 30 डेज नवंबर के हैं, हर डे वो कितना पे कर रही है? 28 cents पे कर रही है. प्लस अब यूनिट्स की बेसिस पर उसको कितनी अमाउंट पे करनी पड़ रही है, दैट इज व्हाट वी नीड टू फिगर आउट. नाउ वी नीड टू फाइंड द नंबर ऑफ यूनिट्स. अगर हम नंबर ऑफ यूनिट्स को x कह लें, पर यूनिट उसको कितना पे करना पड़ रहा है इलेक्ट्रिसिटी का? 16 cents. तो ये टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी? जितने भी नंबर ऑफ यूनिट्स हैं दैट मल्टीप्लाइड बाय द कॉस्ट पर यूनिट. सो दैट वुड बी 16 into x, या फिर x into that amount which is 16. ये टोटल कॉस्ट होगी. What is this supposed to be equal to? Remember, these amounts that are given are in cents. और उसने जो टोटल बिल बताया आपको वो डॉलर्स के अंदर है, तो हमें सेम यूनिट करना है. तो हम इस डॉलर्स को अगर सेंट्स में कर लें, दिस इज 3080 cents. So the equation that we get from that is 30 into 28 plus 16x, that should equal 3080. इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है. So 30 into 28, let's see what that is. That is giving me 840 plus 16x, that equals 3080. इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी. So 3080 minus 840 divided by 16, that turns out to be 140. So she is using 140 units in this one. Okay. All right, let's move on. Part C, it says the amount of electricity generated is measured in gigawatt hours. The table shows information about the amount of electricity generated in different countries. So we have these 4 countries. Electricity generated in 2010 दी हुई है, वो scientific notation के अंदर दी हुई है. ये भी gigawatt hours unit है, इसका भी gigawatt hours unit है. So we don't have to worry about that. Same units आ रहे हैं. 2010 की आपको electricity generated दी हुई है और 2016 की दी हुई है for these 4 countries. Now, what do we need to figure out? It says calculate how much more electricity was generated in Japan than in Australia in 2016. Give your answer in standard form. Okay, so we're talking about Japan and Australia. So that's this number here and this number here. 2016 की बात हो रही है. जापान में कितनी ज्यादा जनरेट हुई थी इलेक्ट्रिसिटी? तो जापान वाले नंबर में से आपने ऑस्ट्रेलिया वाला नंबर माइनस कर देना है, ठीक है. बट रिमेंबर, इन ऑर्डर टू सब्ट्रैक्ट और ऐड नंबर्स इन साइंटिफिक फॉर्म, what you have to do is you have to convert them to the same power of 10 first of all, ठीक है. अब ये पेपर 2 है, इसमें आप डायरेक्टली ये भी कर सकते हैं कि कैलकुलेटर में डालें और आपके पास डायरेक्टली भी अमाउंट आ सकती है. दैट्स आल्सो ओके, बट इफ यू वांट टू डू इट प्रॉपर्ली, ये क्या होएगा, जो छोटी पावर है आपने दोनों नंबर्स को उसमें कन्वर्ट कर लेना है. दिस इज 10 raised to power 5, दिस इज 10 raised to power 6. 10 raised to power 5 में कन्वर्ट कर लेते हैं दोनों को. ऊपर वाला नंबर तो वही रहेगा 2.43 into 10 raised to power 5. 10 raised to power 6 को अगर हम 10 raised to power 5 में लेके जाएंगे, we can think of it like this, that this is 1.03 into 10 into 10 raised to power 5. 10 power 6 को हमने ब्रेक कर लिया दो पार्ट्स में, 10 raised to power 1 and 10 raised to power 5. So 1.03 into 10, what does that become? That is 10.3.
So हम इस नंबर को कैसे लिख सकते हैं? फिर हम इस नंबर को लिख सकते हैं 10.3 multiplied by 10 raised to power 5. And now we can subtract these two numbers. We can say 10.3 into 10 raised to power 5 minus, subtract from this whole thing, 2.43 into 10 raised to power 5. ये हमें evaluate करना है. ये हम देख लेते हैं क्या आता है. 10 raised to power 5 तो दोनों के अंदर आ रहे हैं. हम सिर्फ क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. 10.3 minus 2.43 ये आप कैलकुलेटर में डालें, देखें आपके पास क्या आता है. This turns out to be 7.87. Now this is already standard form. इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है. You just write your answer like this. Say this is 7.87 into 10 raised to power 5, and that's your final answer here. Okay, let's look at part 2 of this now. It says calculate the percentage increase in electricity generated in Turkey from 2010 to 2016. टर्की में कितने परसेंट चेंज आया? परसेंटेज इंक्रीज की बात हो रही है. इंक्रीज कैसे कैलकुलेट करते हैं? Remember the formula for that: new amount minus the old amount divided by the old amount into 100%. तो बेसिकली जो चेंज आ रहा है वो न्यूमरेटर में आएगा, divided by the old amount. old amount से आपने डिवाइड करना है उसको. Let's do that. What's the new amount? The new amount in the numerator is 2.62 into 10 raised to power 5. Subtract from that the old amount, which is 2.03 into 10 raised to power 5. In the denominator, we have the old amount, which is 2.03 into 10 raised to power 5, and we multiply this by 100%. अच्छा देखें, न्यूमरेटर में भी आपके पास 10 raised to power 5 आ रहा है, डिनोमिनेटर में भी 10 raised to power 5 आ रहा है. अगर आप न्यूमरेटर में से 10 raised to power 5 कॉमन ले लेते हैं तो वो वैसे कैंसिल आउट हो जाएगा. तो आप कैलकुलेटर में सिर्फ ये अमाउंट्स भी डाल देंगे तो आपको सही आंसर मिल जाएगा. आपको पूरा डालने की जरूरत नहीं है. But if you want to put the whole amount, that's also fine. You will get the result from this. Let's see what the numerator is. 2.62 minus 2.03. The change that I'm getting in the numerator is 0.59. In the denominator, we have 2.03 into 100%. ये देखते हैं हमारे पास क्या आता है. This is giving me 29.06%. Okay. यहाँ पे लिख देते हैं 29.06%. That's our final answer. If you want to round it off, you can do that. You can write it as 29.1, and that's also fine. Or you can just leave it like this, and that will be okay. Now it says there was a 4% decrease in the amount of electricity generated in Spain from 2013 to 2016. Calculate the amount of electricity generated in Spain in 2013. Okay. अब स्पेन में उसने क्या कहा है? उसने कहा है 2013 से 16 में. अब देखें 2013 का डेटा हमारे पास नहीं है, हमारे पास 2010 और 2016 का डेटा है. 13 to 16, the electricity generated reduced by 4%. Now let me write down those numbers here. 2013 में जो electricity generated थी हमें वो नहीं पता. Let's call that X. What about 2016? 2016 का नंबर हमारे पास स्पेन के लिए है यहाँ पे. That's 2.64 into 10 raised to power 5. Let's write that here. 2.64 into 10 raised to power 5. उन्होंने कहा है कि ये 4% डिक्रीज हुआ है. X जो है वो डिक्रीज हुआ है 4% to become 2.64. Now, again, there are multiple ways of thinking about this. One way of doing this is, अगर original amount 100% थी, original amount 100% थी, तो वो क्या हो गई है? वो 96% हो गई है. All right, 4% decrease हो गया है तो वो 96% पे चले गया है. You could use ratio method here. That's also fine. Another possibility is, क्योंकि 4% decrease हुआ है, आप कह सकते हैं 100% minus 4%, that is 96%. कि अगर आप x का 96% निकाल लें, which is x into 96 over 100, that should equal 2.64 into 10 raised to power 5. And that should give you the value for x as well.
ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं. There's yet another possibility. अब x में से माइनस कर दें 4% of x, which is going to be 4/100 into x, that is equal to 2.64 into 10 raised to power 5. ये भी कर सकते हैं. So ठीक है, so there are multiple ways of doing this. You could do it any way you want. यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी. Just do this on your calculator. 2.64 into 10 raised to power 5 multiplied by 100 divided by 96, and that is giving me 275,000 gigawatt hours. This is the final result that I'm getting from this. अब उसने क्वेश्चन के अंदर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी हुई है कि आपको फाइनल आंसर साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है. So it's perfectly okay if you just write this number as it is as well. आप इसको as it is भी लिख सकते हैं, and that will be acceptable because उसने कुछ नहीं कहा कि आपको साइंटिफिक फॉर्म में आंसर देना है. If you want, आप इसको साइंटिफिक फॉर्म में भी दे सकते हैं because उसने सारी इंफॉर्मेशन साइंटिफिक फॉर्म में दी हुई है. If it's going to be okay if you write it in scientific form as well, this would become 2.75 into 10 raised to power 5. देखिए इस वक्त कितने कितने आपके पास आ रहे हैं numbers, 5 numbers, so that's going to be 10 raised to power 5. This is another way of writing that. आप ये भी यहाँ पे लिख सकते हैं, and that will be your final result. All right, let's move on. Question number 2. It says the table shows the number of exercise classes conducted in 1 week by each of 80 members of a gym. We need to find the mod first of all. Mod क्या होता है? जो सबसे ज्यादा repeated value होती है. Frequency जिसकी सबसे ज्यादा है. किसकी सबसे ज्यादा frequency है? 29 सबसे ज्यादा frequency है. किस number की? 1 की. So the mod is 1. Mod 29 नहीं होएगा. जिस number की सबसे ज्यादा frequency है वो आपका mod होएगा, which is going to be 1 in this case. It says find the median. Median कैसे figure out करें? There are 80 members in total, right? 80 members total है. अच्छा, जो ग्रुप डेटा होता है ना इस तरह से, उसमें आप दोनों कर सकते हैं. आप 80 + 1/2 इस तरह से भी कर सकते हैं, या आप 80/2 भी करेंगे, उससे आपको सेम ही नंबर मिलेगा इस तरह के डेटा के अंदर. तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. लेट्स जस्ट डू एनी ऑफ देम. अगर इसमें हम ये करते हैं 80 + 1/2, लेट्स सी व्हाट दैट गिव्स अस. This gives us 40.5, right? Yeah. So 40.5 आपको मिलता है. अब 40.5 नंबर पे तो कोई वैल्यू नहीं आती, तो आप क्या करोगे? आप ये दो वैल्यूज देखोगे. आप कहोगे 40th वैल्यू देखते हैं और हम 41st वैल्यू देखते हैं, उनकी एवरेज ले लेंगे. ठीक है, अब क्या करें? 40th वैल्यू कौन सी है? अब देखें, फर्स्ट 10 वैल्यूज तो सारी 0 है. फर्स्ट 10 वैल्यूज सारी 0 है. नेक्स्ट 29 वैल्यूज यानी 10 + 29, तो यहां तक 10 वैल्यूज हो गई हैं इस पॉइंट तक. उसके बाद 29 और वैल्यूज हो गई. यहां तक कितनी वैल्यूज हो गई हैं? 39 हो गई हैं. 10 + 29 दैट्स 39. अब उसके बाद जो आपकी वैल्यू होगी 40, 41, 43, 42, 43 एंड सो ऑन, वो सारे क्या होंगे? 2s होंगे. नेक्स्ट 26 वैल्यूज आर गोइंग टू बी 2s, यानी कि 40th वैल्यू भी 2 है, 40th वैल्यू भी 2 है और 41st वैल्यू भी 2 है. तो मीडियन क्या होना चाहिए? मीडियन आपके पास यहाँ पे होना चाहिए 2 for that reason. Now it says a pie chart is drawn to show this information. Calculate the angle representing 5 classes attended. Okay. अब देखें 5 क्लासेस कितने लोगों ने अटेंड की? 2 लोगों ने. अब जब पाई चार्ट बनाएंगे तो ये वाला नंबर 2 किस एंगल से रिप्रेजेंट हो रहा होगा पाई चार्ट में? 2 is the number that we're talking about. Out of how many people? 80 people. तो आप देखें टोटल अगर 80 है तो जब हम वो करते हैं पाई चार्ट बनाते हैं, 80 जो है वो 360 डिग्री से रिप्रेजेंट हो रहा होगा. 2 कितने से रिप्रेजेंट होगा ये आपको फिगर आउट करना है. ठीक है, आप रेशियो मेथड इस तरह से यूज कर सकते हैं. What does that give you? If you cross multiply, that gives you 80x equals 360 into 2 and x equals 720 over 80. That turns out to be 9 degrees. तो ये 9 degrees से represent होना चाहिए. अब इस तरह भी कर सकते हैं, रेशियो से डायरेक्टली भी कर सकते हैं. 2 out of 80 है, इसको 360 से मल्टीप्लाई कर दें. That's going to give you the same thing, which is 9 degrees. All right.
सो बेसिकली हम इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, उसके उससे हमारे पास ये इक्वेशन बनती है. Let's move on. Part B. It says some members of the gym were surveyed about how much time they spent at the gym. The histogram shows the times, T minutes they spent on their last visit. 30 members spent between 30 and 60 minutes at the gym. Calculate the number of members surveyed. अच्छा, अब देखें, let's try to understand this. Remember, histogram में आपके पास y एक्सिस पे क्या होता है, वर्टिकल एक्सिस पे हमेशा फ्रीक्वेंसी डेंसिटी होती है. फ्रीक्वेंसी नहीं होती, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी होती है. फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है एरिया ऑफ दीज बार्स. एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है? फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट कर रहा होता है. ठीक है, अब जो इंफॉर्मेशन है हमारे पास वो किस चीज की है? टाइम्स दे स्पेंड एट द जिम एंड देयर लास्ट विजिट. अब उसने कहा है 30 लोग ऐसे हैं. 30 का मतलब है दिस इज द फ्रीक्वेंसी फॉर व्हाट? फॉर 30 for the bar between 30 and 60. 30 से 60 तक आपके टोटल कितने लोग हैं? 30 लोग हैं. अब इसको यूज करके उसने कहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मेंबर्स दैट वर सर्वेड. नाउ हाउ डू यू फिगर दिस आउट? सबसे पहले तो देखें कि हम यहां से क्या कर सकते हैं. 30 लोग अगर इस रीजन में आ रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? ये विड्थ कितनी थी? 30, राइट? क्लास विड्थ यहाँ पे कितनी बन रही है? 60 माइनस 30 इज 30. और हाइट कितनी है? 1. तो ये एरिया अंडर ग्राफ कितना होगा? 30 into 1 दैट इज 30. तो वो नंबर यहाँ पे उधर से आ रहे हैं. वी नीड टू फाइंड द नंबर ऑफ मेंबर्स सर्व्ड, यानी टोटल ये जो टोटल सर्वे था उसमें सारे मेंबर्स कितने थे. ठीक है, टोटल लोग जो जिनको सर्वे किया गया वो कितने थे. तो बेसिकली हमें ये टोटल फ्रीक्वेंसी निकालनी है विच इज द एरिया अंडर ऑल ऑफ दीज बार्स. इन सब बार्स के एरिया को आपने ऐड करना है, इनका टोटल निकालना है. अब वो कैसे निकालेंगे? इनकी हाइट्स आपको नजर आ रही है लेफ्ट साइड के ऊपर. विड्थ इनकी क्या है हम यहाँ पे लिख लेते हैं नीचे. फर्स्ट की भी 30 है. 0 to 30 the class width is 30, right? 30 to 60 भी class width 30 है. 60 to, अब देखें दरम्यान में एक और बार आ गया, तो this is 75, right? तो ये क्लास विड्थ कितनी हो जाएगी? दरम्यान में 15 हो जाएगी. You have 15 here, and then finally you have 30 again. ये आपके 5 बार्स बन रहे हैं. इनके एरियाज निकालेंगे, इनको ऐड कर लेंगे. वर्टिकल एक्सिस पे देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है. दिस इज 1, राइट? तो ये नंबर क्या हो जाएगा? 0.6. सेकंड तो आपको 1 नजर आ रहा है. थर्ड बार के क्या आ रही है आपकी हाइट? दिस इज 4.4. देन व्हाट अबाउट दिस वन? दिस इज 1.6. देन फाइनली वी हैव दिस हियर. दिस इज 0.4. ठीक है, ये हम सारे एरियाज को ऐड कर लेते हैं. अब फर्स्ट वाला देख रहे हैं, ये वाला रेक्टेंगल 30 into 0.6. ये वर्किंग आपको दिखानी है यहाँ पे. इट्स अ 3 mark question. We have to write down how you're getting that final result. 30 into 0.6. Now let's look at the second rectangle. That's 30 into 1. Third rectangle, this one, 15 multiplied by 4.4 plus the next one, again 15 multiplied by 1.6. And then finally we have this last one, that's 30 multiplied by 0.4. Okay, ये आप कैलकुलेटर में डालें, इसका इवैल्यूएट कर लें, देखें आपके पास क्या आता है. That is going to give you the total frequency. 30 into 0.6 plus 30 plus 15 into 4.4 plus 15 into 1.6 plus 30 into 0.4. And that turns out to be 150. The total members हैं आपके पास इस सर्वे में, they're supposed to be 150. इन सबको टोटल करेंगे आपके पास 150 आ जाएगा. That's your final result here. Okay.
Now, the second part says, Rohit says, 1/10 of these members spent longer than 1.5 hours at the gym on their last visit. Is he correct? Justify your answer. 1/10 of these members, 1/10 कितने हुए? Of 150, इसको 10 से डिवाइड किया, ये आपके पास आ गए 15. तो रोहित कह रहे हैं कि 15 लोग ऐसे हैं who spent longer than 1.5 hours at the gym. 1.5 hours से ज्यादा. ओके, सो 1.5 आवर्स कितने होते हैं? 90 मिनट्स होते हैं. अगर आप ग्राफ में देखें, दिस इज वेयर द 90 मिनट मार्क इज. अब इससे ज्यादा कितने लोगों ने स्पेंड किया टाइम? ये लोग, राइट? व्हाट वाज दिस नंबर? 30 into 0.4. Let's calculate that. 30 into 0.4 is actually 12. Okay. So what does that mean then? Is that statement correct? It's not correct. So we say this is not correct. That's the first thing you have to write down. Okay. You can say this number 110, 1/10 into 150, that is actually 15. The correct number is 12 instead. हम जो यहाँ पे निकाले, यहाँ पे evaluate करके दिखा देते हैं इसको. It's 30 into 0.4, which is 12. So actual number is supposed to be 12. 1.5 hours से ज़्यादा 12 लोगों ने spend किया instead of 15. Okay, so that the statement is not correct. Therefore, let's move on. Question number 3. Points A, B, and C are on the circle with center O. So O is the center of the circle. AOC and OBE, AOC and OBE, these are straight lines. DE is a tangent to the circle at the point C. The angle ABO is 34 degrees. First of all, it says, explain why the triangle AOB is isosceles. So AOB, which triangle is this? This is AOB. Okay. Why is this isosceles? Now it's pretty obvious. Isosceles triangle क्या होती है? जिसकी दो sides equal होती हैं. तो हम क्या कह सकते हैं? AO and BO, they're both radii, right? So OA and OB are radius of the circle. Radius, या उसका plural क्या होता है? Radii. They're both radii of the circle. All right. So that means you have two sides that are equal. So it's an isosceles triangle. The next part says find the angle BEC. BEC. So we're looking for this angle now. How can we figure this out? Let's call this angle X. हम देखते हैं कैसे हम फिगर आउट कर सकते हैं. मार्क कर लेते हैं सारे एंगल्स जो हमें पता चल सकते हैं डायग्राम से. फर्स्ट पार्ट में उसने क्या कहा? ये आइसोसेलेस ट्रायंगल AOB. तो अगर ये 34 डिग्रीज एंगल है तो उसने आपको एक हिंट दे दी इस तरह से कि ये एंगल भी 34 होना चाहिए. Okay. All right. So that's one angle that we know. What can we do now? We can say if these two angles are 34, what about this third angle now? ये कितना हो जाएगा? 180 minus. So it's a 3-mark question. You should write down this wording here as well. आप यहाँ पे लिख देते हैं एंगल AOC कितना होएगा. सबसे पहले ये फिगर आउट कर लें. एंगल AOB, sorry. AOB, it's going to be 180 minus 2 times 34. ये 34 minus 34. ये आप देख लें क्या आता है. AOB angle 180 minus 68. That's giving me 112. So this angle is 112. Now if this angle is 112, what about this angle? ये जो बाहर वाला angle रह गया. Remember, angle on a straight line is 180 degrees. तो नीचे वाला जो angle होगा आपका BOC, what is that going to be? BOC angle would be 180 minus 112, which is 68 degrees. So this angle is 68 degrees.
Now we are closer to our final answer. 68 degrees ये angle आ गया आपके पास. ये x हमारे पास नहीं है. But we know that this angle is 90, right? Why? Because DE is a tangent to the circle. अगर ये line DE tangent है, so we have OC that is radius, DE that is tangent. तो ये जो angle बनेगा इन दोनों के दरमियान में, that is supposed to be 90 degrees. So we can write that here. We can say angle OCE is 90 degrees. Why? Because tangent is perpendicular to radius. So what about x then? X is going to be 180 minus 68 minus 90, and that will give you the final result. Which turns out to be 22 degrees. So that's the angle that we were looking for. This angle is supposed to be 22 degrees. All right, let's move on. Part B. It says OPS and OQR are sectors of circles, each with center O. OPQ and OSR are straight lines. We can see that in the diagram. OP length is 7.4. PQ is 1.2, and the angle QOR is 96 degrees. We need to calculate the shaded area. Now that's pretty straightforward. How do you describe the shaded area? It's just the bigger sector minus the smaller sector, right? बड़े वाले sector के area में से छोटे वाले sector के area minus कर देना है. So shaded area is just the area of the sector OQR minus the area of the sector OPS. That's all that we have to do here. Now, what's the formula for area of sector? We know that's theta over 360 multiplied by pi r squared. Angle to दोनों में same है, which is 96 degrees. So 96 over 360 multiplied by pi r squared OQR. बड़े वाले सेक्टर का रेडियस कितना है उसने बताया हमें क्या वो? That is उसने OP बताया है और PQ बताया. अच्छा, so we know this length is 7.4, and we know that the total length, no, not the total length, we know that this length P to Q, that is 1.2. So what about the total length then? 7.4 plus 1.2, that will be 8.6. तो ये हो गया हमारे पास 8.6 का स्क्वायर. Subtract from that 96 over 360 multiplied by pi into 7.4 का स्क्वायर. ये दोनों एरियाज हम निकालेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एंड दैट्स गोइंग टू गिव अस द फाइनल रिजल्ट. ठीक है, पूरा कैलकुलेटर में इवैल्यूएट करना चाहें इकट्ठा कर लें या अलग अलग कर लें, दैट्स योर चॉइस. 96 over 360 into pi into 8.6 squared, that is giving me 61.96. Subtract from that the area of the other sector, which turns out to be 45.8756. So that's 45.88. 61.96 minus the answer. That turns out to be 16.084. That is your final answer. You can leave it like, you can leave it as 16.1. You can leave it as 16.08 or round it off to 16.1. दोनों तरह कर सकते हैं, that's acceptable. Okay, that's your final answer. Let's move on to question number 4. It says the diagram shows the positions of 3 villages, P, Q, and R. R is due west of P, and Q is on a bearing of 140 degrees from P. Okay, so we can see that in the diagram. R is due west of P. Yeah, so P is right here. R is due west. इसके left side पे है बिल्कुल, right? So it's a 90 degrees angle here. Q is on a bearing of 140 from P. तो अगर हम P के ऊपर एक vertical line बनाए इस तरह से, which is the north, उससे bearing क्या है? Clockwise आके आपके पास ये 140 degrees की bearing बन रही है point Q की. वो भी आपको diagram पे उसने बता दिया. Yeah, you can see that in the diagram as well. There are 2 lengths that are given in kilometers. We need to calculate the angle PRQ.
So we're looking for this angle here. Let's call this x. ये angle हमें चाहिए. We know two sides in this triangle. What else do we know? We know this angle. This is 140 degrees. We also know this angle. This is 90 degrees, right? तो ये remaining angle कितना होगा अंदर वाला? We can figure that out. 180 में से minus कर दें. Sorry, 360 में से minus कर दें. Total angle एक point के ऊपर कितना होता है? 360. 360 minus 140 minus 90. That gives me 130 degrees. So now think about this triangle. We have a pair of angle inside 7.5 and 130 degrees. हम क्या कर सकते हैं? हम 3.8 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाला एंगल निकाल सकते हैं, और जब वो एंगल आ जाएगा तो थर्ड एंगल निकालना तो फिर आसान है ट्रायंगल का. लेट्स कॉल दिस एंगल y. We can use sine rule. We can say sine y over 3.8, that should equal sine of 130 degrees divided by 7.5. इसको सॉल्व कर लें, आपके पास एंगल y आ जाएगा सबसे पहले. Let's evaluate this. (3.8) into sine of 130 degrees divided by sine of, no, divided by 7.5. That's giving me 0.3881. Now take sine inverse of that, and that gives me 22.84 degrees. Now we have the angle y. Angle x कैसे आएगा? जो हमें एक्चुअली फाइंड करना था, PRQ एंगल फाइंड करना है. इसको हमने x क्या है? x कैसे आ जाएगा? 180 minus 130 minus 22.84 degrees. Let's see what this turns out to be. That's 27.16 degrees. And that's your final answer here. 27.16 degrees. All right. Let's move on. It says work out the bearing of R from Q. From Q. Q is your reference point. Q is the point of reference, right? Q से measure करना है. Q पे हम क्या करेंगे? एक नॉट बना देंगे इस तरह से. बेयरिंग किसकी चाहिए? R की चाहिए. R is here. So we are looking for this angle. This is what we are looking for. Okay? Now, how can we figure this out? We know the angle Y now. We figured that out in the previous part. That was 22.84. Let me mark that here. This angle is 22.84 degrees. We have figured this out. Can we figure out this angle somehow? Let's think about this. What about this angle? ये कितना होगा? If this is 22.84, अगर हम ये एंगल भी निकाल लें तो 360 में से ये दोनों ऑरेंज वाले एंगल्स माइनस कर देंगे तो हमारे पास बियरिंग आ जाएगी. अब ये ऊपर वाला एंगल कैसे आएगा? एक तो आप डायरेक्टली सोच सकते हैं. देखें, ये एक वर्टिकल लाइन है, ये भी वर्टिकल लाइन है. If this angle is 140 here, जो नीचे वाला एंगल होना चाहिए 180 minus 140 होना चाहिए 40 degrees. If you don't understand that, another way of thinking about this is आप इसको इस तरह से ब्रेक कर लें. एक वर्टिकल लाइन यहाँ पे बना दें. Now, if this angle is 140, what about this angle here? 180 minus 140, which will be 40 degrees. Now, if this is 40, this angle here is also supposed to be 40. Why? Because these are now alternate angles. ये भी north है, ये भी north है. So we have two parallel lines. These two parallel lines, एक line जा रही है दरम्यान से, उससे alternate angles बनते हैं. ये angle हमारे पास 40 degrees आ गया. So we have this angle now 40. We have this angle 22.84. 360 में से अगर हमें दोनों angle minus कर दें, हमारे पास ये बाहर वाला black वाला angle आ जाएगा, and that is what we're looking for. Let's figure that out.
बेयरिंग क्या होगी 360 minus 22.84 and 40. ये दोनों एंगल उसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास बियरिंग आ जाएगी. लेट्स फिगर दिस आउट. 360 minus 22.84 minus 40, and that turns out to be 297.16. And that's our final answer here. This is the bearing that we're getting 297.16 degrees. That is what we were looking for. Okay, let's move on. Now it says the distance by road from village P to village T is 16.5 kilometers. Okay, village P to village T. Now, do we have T here? No, so T wahan pe nahi represented. 16.5 kilometers. Now, this person leaves village P at 10:30 and drives to village T at an average speed of 45 kilometers per hour. So leaves at 10:30. Distance से दिया हुआ है, time starting time दिया हुआ है P से, और 45 kilometers per hour जो है वो average speed है. He stops in village T for 15 minutes. Okay, so P से T पे जाता है, 15 minutes वहाँ पे रुकता है. He then drives back to village P and arrives there at 11:35. Back to village P at 11:35. We need to calculate the average speed in kilometers per hour for the journey back from village T to village P. Now let's try to understand this situation first of all. S2 summer में तो नहीं कर रहा हूँगा मैं, unfortunately. I'll try if I can do it in the later part of the next year, maybe December onward, but I can't promise that right now. Actually, Lahore में no one studies S2, at least the candidates who study at schools, जो आपके regular candidates होते हैं, S2 यहाँ पे कोई भी school offer नहीं करता. So फिर मुझे उसके लिए extra अलग से time निकालना पड़ेगा. I can't promise it. I'll try if I can do it next year. Summer में तो definitely नहीं हो सकता. ठीक है? अच्छा. Okay. हाँ, अभी देखिए, let's try to understand this journey. क्या हो रहा है? P से start किया और T पे जाके end हो रहा है. ठीक है? P से लेकर T पे जा रहे हैं. और फिर क्या हो रहा है? T से P पे वापस आ रहे हैं. ये दो चीजें हो रही हैं. अब P से T पे जाते हुए अगर मैं actually use this line tool, that's not working. Okay. So अब दो काम हो रहे हैं. एक हम क्या कर रहे हैं, P से T पे जा रहे हैं, राइट साइड पे. एक काम कर रहे हैं, T से P पे वापस आ रहे हैं. जाते हुए हमें क्या पता है? जाते हुए हमें ये पता है कि जो स्पीड है दैट इज 45 किलोमीटर पर आवर. वापस आते हुए हमें स्पीड नहीं पता, हमें स्पीड निकालनी है. ठीक है? अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, जाते हुए हमें कौन सी दो चीजें पता है? हमें पता है कि 16.5 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस है, और डिस्टेंस तो वापस आते हुए इतना होएगा 16.5 किलोमीटर. अब टाइम कितना लगा जाते हुए? लेट्स फिगर दैट आउट फर्स्ट ऑफ ऑल. जाते हुए टाइम कितना लगा वो फिगर आउट कर लेते हैं. उससे क्या होएगा, हमें वापसी के टाइम पे मिल सकता है, क्योंकि हमें टाइम ऑफ डिपार्चर और टाइम ऑफ अराइवल पता है दोनों. जाते हुए टाइम कितना लगा? लेट्स फिगर दैट आउट. From P to T, what was the time taken? Time is equal to distance over speed. Distance कितना था? 16.5. Speed 45. What's the time taken in the first part of the journey? 16.5 divided by 45. That is going to give that is giving me 11 over 30, which is 0.366, and so on. This is the time taken.
जाते हुए, ठीक है। अब उसने क्या कहा हुआ है इसमें, इसमें और क्या होता है, इसको हम मिनट्स में अगर कन्वर्ट कर लें, सो दिस इज एन आवर्स, अगर हम इसको मिनट्स में कन्वर्ट करें, लेट्स सी वो क्या आता है। दिस इज गिविंग मी 22 मिनट्स, इसको अगर हम 60 से मल्टीप्लाई कर दें, दैट बिकम्स 22 मिनट्स। सो जाते हुए 22 मिनट्स लगते हैं। तो आप देखें क्या हो रहा है, 10:30 पे उसने स्टार्ट किया, 22 मिनट्स में वो पहुंच गया वहां पे, टी से स्टार्ट किया था राइट, टी पे कब पहुंचा, 10:52 पे, 22 मिनट्स में। अब 15 मिनट्स जो है वो वहां पे जाके रुक रहा है, ओके। तो 15 मिनट्स में ऐड कर दें, 10:52 में 15 मिनट्स ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11:07, 11:07 तक अभी वो वहीं पर है। और फिर वो क्या करता है, वापस पी पे आता है, वापस पी पे आता है किस टाइम, 11:35 पे। अब कितना टाइम लगा उसको वापस आते हुए, 35 माइनस 7, दैट्स 28 मिनट्स, 28 मिनट्स उसको लग रहे हैं वापस आते हुए, ठीक हो गया। ये आवर्स में कितना है, 28/60, दैट्स 7/15 आवर्स। ये इसको डेसिमल्स में अगर लिखेंगे तो वो क्या होगा, 0.4666666661। ये लग रहा है उसको टाइम वापस आते हुए। तो अब हम देखते हैं वापस आते हुए उसकी स्पीड क्या होएगी। स्पीड इज सपोज टू बी डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस कितना था वापस आते हुए, 16.5 किलोमीटर, डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम कितना लगा, 28/60। ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, या आपको डेसिमल्स में डाल दें, अगर आप एग्जैक्ट इनफैक्ट कैलकुलेटर वाली वैल्यू यूज करें दैट्स बेटर। तो एग्जैक्ट आंसर आ रहा हो आपके पास, ये आपके पास डिनोमिनेटर में आ गया। ये इवैल्यूएट कर लेते हैं, 16.5 डिवाइडेड बाय द आंसर, एंड दैट इज गिविंग मी 35.36, 35.36 kilometers per hour. This is the speed on his return journey, 35.36. All right. तो हमें जाते हुए पता था स्पीड क्या थी, डिस्टेंस क्या थी, उससे हमने टाइम निकाला, फिर वापस आने का टाइम निकाल लिया, दैट वाज 28 मिनट्स वापस आने का। वो हमने यहाँ पे यूज कर लिया दूसरे फॉर्म में, वापस आते हैं आने के लिए, ठीक है। लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 5, it says Khalid has these 10 number cards. He takes a card at random, notes the number, and replaces it. Now, this is important. He's replacing the card, right? He then takes a second card after that. So, he's taking out 2 cards, 10 number cards in total. 2 cards वो उठा रहा है, एक दफा एक उठाता है, फिर उसको वापस रखता है, फिर एक और उठाता है. Find the probability that the first card Khalid takes shows an even number. Okay, even numbers कितने out of 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 out of 10. That's the probabilities. इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो क्या आएगा, 3/5. Now we need to complete this tree diagram. First card, even, odd, even, odd. Okay, so even, odd की हमने probabilities निकालनी है first time और second time. First time even आने की probability कितनी है, 3/5. We figure that out. Odd की क्या होगी, 2/5 हो जाएगी. इसको आप नॉन सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी लिख सकते हो, दैट्स परफेक्टली ओके एज वेल. आप 6/10 भी लिख सकते थे और 4/10 यहाँ पे लिख सकते थे. ट्री डायग्राम्स के अंदर आप एज इट इज अनसिंप्लीफाइड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है. अब देखिए, क्योंकि आप रिप्लेस कर रहे हैं इसको, वापस रिप्लेस कर रहे हैं, इसका मतलब ये है सेकेंड टाइम आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो चेंज नहीं होगी, तो वही रहेगी. बिकॉज आप जो कार्ड आपने उठाया था पहली दफा तो आपने वापस रख दिया, तो सेकेंड टाइम जब आप उठाएंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो वही होगी, ठीक है. तो प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं हो रही होंगी सेकेंड टाइम, तो वही प्रोबेबिलिटी आपके पास सेकेंड टाइम भी आ जाएंगी, 3/5, 2/5, 3/5 एंड 2/5. तो सेकेंड अटेम्प्ट में आपकी प्रोबेबिलिटीज वही रहेंगी जो पहले थी, ठीक है. ऑल राइट, यू आर वेलकम.
Tanmay. I'll try if I can do S2 as well next year, but let's see. You'll find all the P3 content covered. However, वो आपको already यहाँ पे मिल जाएगा, वो पूरा covered है. S2 का I'll try if I can do it next year, but at least you'll find P3 covered on the channel. वो पूरा आपको playlist मिल जाएगी, वो पूरा syllabus covered है. अच्छा. So this is the re-diagram that we have. Now in the third part, it says work out the probability that Khalid takes one odd number and one even number. अच्छा, one odd and one even, ये कौन से cases बन सकते हैं? या तो first time even आ जाए, second time odd आ जाए, या फिर first time odd आ जाए, second time even आ जाए. These are the two cases that we have. इन दोनों की probabilities निकालेंगे, इनको add कर लेंगे. First case की क्या होती है? 3/5 into 2/5, right? Along the branches multiply करना होता है, इसको multiply किया इसके साथ 3/5 into 2/5. नीचे वाले में भी यही करेंगे, 2/5 multiplied by 3/5. Now, since it could be any one of these two cases, इन दोनों को add कर लेंगे. ठीक है? Now, what is that going to be? 3 into 2 is 6. 6/25 plus 6/25, and that gives me 12/25. That's the probability that we have. Okay, that's our final answer. All right, that was part 3 of this. Let's move on to the next one. Basma has a bag containing 5 yellow counters, 3 pink counters, and 4 black counters. Total कितने हुए? 5, 3, 8, and 4, 12. Total 12 counters. She takes 2 counters from the bag at random without replacement. Now that's important. So when she takes one counter out, she does not replace it back, और वो एक दूसरा उठा लेती है उसके बाद. We need to find the probability that she takes one yellow counter and one pink counter, giving our answer as a fraction in its simplest form. अच्छा देखें, इसको आप ट्री बना के भी कर सकते हैं और ट्री के बगैर भी कर सकते हैं. That's your choice. एक येलो काउंटर होना चाहिए, एक पिंक काउंटर होना चाहिए. She is taking out 2 counters. अब क्या क्या possibilities हो सकती हैं? एक possibility, so 2 counters in the first one. Let's write that down here. And second one. अगर हम वैसी सोच के करें तो एक possibility हो सकती है कि first time she takes a yellow counter. First time she takes out a yellow counter, and then the second time she takes out a pink counter. Another possibility is she takes a pink counter the first time and then a yellow counter the second time. ये 2 possible cases हैं. अब first time yellow counter की probability क्या है? Let's figure that out. First time yellow counter निकालने की probability क्या होगी? Total कितना yellow है? 5 out of 12. So this is going to be 5/12. All right. अब एक जब आपने निकाल लिया, एक येलो निकाल लिया, अब उसके बाद पिंक आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? पिंक कितने हैं उसमें? 3 out of how many? 11. 12 में से एक आपने निकाल लिया हुआ है, तो बाकी कितने बचे हैं? 11. ये आपके पास हो गया फर्स्ट केस. दिस इज द फर्स्ट पॉसिबिलिटी. अब सेकंड केस क्या आएगा? फर्स्ट टाइम आपने पिंक निकाला, फर्स्ट में पिंक आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 3 out of 12, राइट? लेकिन अब फिर जब आपने एक पिंक निकाल लिया तो टोटल कितने बचे? 12 में से 11 रह गए. उसमें से येलो कितने? 11 में से 5. So 5/11. ये दोनों आपने फाइंड करनी है, इन दोनों को आपने ऐड कर लेना है. ये दोनों केसेस निकालते हैं. फर्स्ट केस क्या है? 15/11/12, that's 132, plus 15/132. ये evaluate कर लेते हैं, देखना के पास क्या आता है. That's 30/132. इसकी simplified form हमारे पास आ जाएगी 5/22. And that's the final answer that we have from this. 5/22. All right, we can write that here. 5/22. Let's move on.
Question number 6. The diagram shows a right angle triangle with dimensions given in centimeters. Show that 5x squared plus 30x minus 39 is equal to 0. A right angle triangle here, we can use Pythagoras to connect these three sides. Hypotenuse square, which is 3x plus 5 the whole square, should be equal to base ka square, which is 8 squared, plus perpendicular square, so that's 2x whole squared. Let's simplify this. 3x, this is a plus b whole square, right? So a square, that's 9x squared plus 2 into 3x into 5. 2 into 3x, that's 6x into 5, which is 30x. Plus 5 ka square, that's 25. On the other side, we have 8 squared, which is 64, plus 4x squared. Let's take everything to one side. Left side pe le aate hain agar. 9x square minus 4x square, that's going to give us 5x square. 30x as it is. And then we have 25 minus 64. That's going to be minus 39 equals 0. And that's what we had to prove. Ye hamare paas ye equation aa gaya. In the second part, it says, solve this equation, giving an answer correct to 2 decimal places. जब question के अंदर उसने कोई instruction दी होती है, it's necessary to follow that instruction. ये equation solve करनी है. अब जब उसने decimal places में कहा होता है ना, तो होता ये है कि factorization नहीं हो रही होती है. आप check कर लें, factorization इसकी most likely नहीं हो रही होगी, तो आप क्या करेंगे? Quadratic formula use करेंगे. अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में वैल्यूज इनपुट करके दिखाना जरूरी है. ओके, वैल्यूज इनपुट करके दिखाना जरूरी है, अदरवाइज आपको मार्क्स उसके नहीं मिलेंगे. ठीक है, डायरेक्टली कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, you'll get 0 marks for that. So let's figure that out. Let's input values in the quadratic formula. Minus b, so that's minus 30 plus minus square root of 30 squared minus 4 into 5 into minus 39 whole divided by 2 into 5. Let's simplify this. This gives us minus 30 plus minus square root of 30 squared minus 4 into 5 into minus 39. And that's giving me 1680 inside the square root. In the denominator, we have 10. अब देख लें इसके दो आंसर्स क्या आते हैं. आप कैलकुलेटर में इक्वेशन सॉल्व करने वाला फंक्शन भी यूज कर सकते हैं इसके बाद, लेकिन इतनी वर्किंग दिखाना जरूरी है. उसके बाद आप कैलकुलेटर से इक्वेशन सॉल्व करने वाला फंक्शन यूज करें, so that's also fine. Let's see what this turns out to be. Minus 3 plus square root of 1680 divided by 10. Okay, the first answer that I'm getting from this is 1.098. 1.0987. So that will be 1.099. And the second answer that I'm getting is minus 7.0987. So that's 0.0988. This is the second answer that I'm getting. Okay, लेकिन उसने अब क्वेश्चन में क्या कहा है? 2 decimal places. अब आंसर लिखेंगे तो राउंड ऑफ करके लिखेंगे 2 decimal places पर. 1.099. What would that become? That will be 1.10 to 2 decimal places. What about this one? ये भी ऐसे होएगा या क्या हो जाएगा? minus 7.10. These are the two answers that we get from this. This is the final result. Now it says calculate the area of the triangle. Okay, area of the triangle. Which triangle? Oh yeah, this triangle. Half into base into height, right? Half into base. Base kya thi 8. Into height, that's 2x. अब देखें, x represents a length there. 2x is a length. x की वैल्यू नेगेटिव तो नहीं हो सकती है, फिर तो लेंथ नेगेटिव हो जाएगी. तो कौन सी वैल्यू कंसीडर करेंगे? 1.0991. ठीक है, उसकी अब ज्यादा एक्यूरेट वाली वैल्यू यूज कर लें. 2 into x, right? x की वैल्यू क्या है? 1.099. Let's just input that here और इसको evaluate कर लें. So this is giving me 8.792.
That's 8.79. That's our final answer. This is what we were looking for. Okay, angle units का मतलब तो नहीं है ना, centimeters, yeah, सारे same minutes हैं, so that's okay. Now it says the diagram shows a different right angle triangle. It's not the same triangle. The length of the hypotenuse is 12. So that means this length is 12. Calculate the shortest distance from A to BC. Shortest distance from a point to a line. ये क्या होता है? ये हमेशा एक right angle होता है. A से BC. That's this angle here. ठीक है? ये sorry, this length here, ये perpendicular distance हमें निकालना है. Let's call this x. This is what we need to figure out somehow. Now, what can we do for this? Now, for this right angle triangle, we don't have enough information. हमें सिर्फ एक angle पता है, 35 degrees, and that's it. What we can do is we can start with the bigger right angle triangle जो उसने originally question के अंदर दी हुई है. Let's start with that one, triangle ABC. उस triangle में हम क्या करते हैं, पहले ये लेंथ निकाल लेते हैं एक. जब ये लेंथ आ जाएगी, या ये लेंथ निकाल लें, ये भी निकाल सकते हैं, या फिर आप ये लेंथ पे निकाल सकते हैं. दोनों में से कोई भी एक लेंथ निकालना. AC निकाल लेते हैं. चलें, let's figure out this length. How can we do that? This is the right angle triangle that we're talking about. This is the angle. We know the hypotenuse. AC चाहिए. इस angle के perspective से AC is adjacent. इस angle के adjacent side है. So this is the base, right? Base और hypotenuse में कौन सी ratio होती है? Cos, right? We can use cos here. We can say cos of 35. That is equal to base, which is AC, over the hypotenuse, which is 12. यहाँ से क्या होएगा, हमारे पास AC की लेंथ आ जाएगी. Let's see what that turns out to be. 12 into cos of 35, and that is giving me 9.8298. This is the length AC. Now, once we have this length, what we can do is we can say, let's use this other triangle now, which is, let's call this point something. Let's call this X. AXC triangle अब use कर लेते हैं, ये वाली triangle. Let's use that other triangle now, AXC. अब इस triangle में हमें क्या पता है? हमें AC की length पता है. AC is 9.8298. AC is the hypotenuse now. इस triangle के अंदर दूसरे triangle हम कौन सी use कर रहे हैं आप? AXC. We know the hypotenuse. We know the angle. We need to find perpendicular. X is perpendicular. Perpendicular hypotenuse में कौन सी ratio होती है? Sine. So we can say sine of 35. That should equal perpendicular, which is X, divided by the hypotenuse, which is 9.8298. यहाँ से हमारे पास X की वैल्यू आ जाएगी. उसको मल्टीप्लाई कर दें वहां पे उस साइड पे. Sine of 35 के साथ you get 5.638. That's your final answer. So round off करना चाहें आप लिख सकते हैं 5.64, and that is what we were looking for. This should be the length that we get in part B here. Okay, let's move on. Question number 7. It says, on the grid below, draw the graph of y equals 2 raised to power x for x between 0 and 4. Now, what do we do for such problems? All you have to do is just take some values of x and y, plot them and join them with a smooth curve. अब ये 4 mark question है, तो आपने working show कर देनी है. इसका table आपने यहाँ पर show कर देना है. Calculator में आप table function भी use कर सकते हैं. टेबल फंक्शन कैसे यूज कर सकते हैं? टेबल उसमें जाके आप
ये फंक्शन डाल देंगे, जैसे f of x equals 2 raised to power x, और फिर आप स्टार्ट में क्या डालेंगे, स्टार्ट विल बी 0, एंड विल बी 4, एंड देन स्टेप विल बी 1। आपको पूरा टेबल मिल जाएगा उससे। ये आप अलग अलग वैल्यूज डाल लें। कौन सी वैल्यूज डालेंगे हम? 0, 1, 2, 3, 4, एंड दैट्स इनफ। ये आपके पास 5 वैल्यूज आ जाएंगे। 0 पे देखने क्या आता है। 2 raised to power 0, that's just 1, of course. 2 raised to power 1 is going to be 2. In fact, ये तो आप वैसे मेंटली भी कर सकते हैं। 2 raised to power 2 is going to be 4. 2 raised to power 3 is going to be 8. 2 raised to power 4 is going to be 16. ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। All we have to do now is plot these values on this graph and join those values using a curve. चलिए इनको प्लॉट करते हैं। 0 and 1. Now be careful about the scale. Horizontal axis पे देखें, 1 है आपका बड़ा बॉक्स, तो हर छोटा बॉक्स कितना रिप्रेजेंट कर रहा है? Every small box represents 0.1. What about the vertical axis? Vertical axis पे 2 boxes represent 1 unit. ठीक है, so be careful about that. Now horizontally हमें क्या करना है? 0 पे 1, 0 and 1, this is 1 point that we have to mark. Let's mark that first of all. Then 1 and 2, where is that going to be? That is going to be here. Then 2 and 4, that should be here. 3 and 8, ध्यान रखते हैं मिडिल में 7.5 होगा, उससे 1 box ऊपर 8, and then 4 and 16, that should be right here. Okay, you have these points. Now just draw a curve, a smooth curve through these points, and that's going to be your sketch. या पेंसिल से बनाएंगे ताकि आपको थोड़ा सा इरेज करना पड़े उसको सही करने के लिए, तो आप कर सकें। But it's going to look something like this. Okay, that was 4 marks, pretty straightforward. Let's look at the second part. It says the diagram shows the graph of y equals 1 over 2x squared plus 3x for x between -1 and 3. By drawing a tangent, estimate the gradient of the curve at x equals 0.5. X equals 0.5, where is that? That is right here. इस पे क्या करना है? टेंजेंट बनाना है और आपने ग्रेडियंट फाइंड करना है इस कर्व का। This is the point. इस पे एक टेंजेंट बना लेते हैं। रिमेंबर, टेंजेंट बनाते हुए आपको क्या ध्यान रखना होता है कि उस लाइन के दोनों साइड्स पे ऑलमोस्ट सिमिलर गैप आ रहा हो आपके पास कर्व का और उस टेंजेंट का। This is what it might look like. Okay, I'm sorry about that. This is not what it might look like. Okay. अच्छा देखिए, ऊपर से बहुत ज्यादा करीब है कर्व के उसके पास, और नीचे से थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस है। इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, थोड़ा सा टिल्ट कर लेंगे इस तरफ को, and that looks better than before. So this is pretty much the direction of the curve at this point. ये आपके पास आ गई, टेंजेंट आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस टेंजेंट के ऊपर 2 पॉइंट्स लेंगे, थोड़ा सा डिस्टेंस के ऊपर लेंगे एक दूसरे से, एक्यूरेसी थोड़ी सी बेहतर रहती है। जो बिल्कुल किसी बॉक्स किसी उसके ऊपर आ रहा हो कॉर्नर के ऊपर। दिस इज 1 पॉइंट दैट आई कुड टेक। ये मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ। This is 0.9 and 1.6. Okay, 1 point is this one. Let's take another one. I could take this point here, but we'll end पे. That's 0 and 5.8. 0 and 5.8. ये दोनों पॉइंट्स लेके हम ग्रेडियंट निकाल लेते हैं इसका। 5.8
minus 1.6, y2 minus y1 over x2 minus x1. So that's 0 minus 0.9. Let's see what this turns out to be. Okay, so this is giving me 0. Minus 4.666. Minus 4.666. You can say 4.67. That is the gradient that we're getting from this graph. Now it says use the graph to estimate the solution of this equation 1 over 2x squared plus 3x equals 2. Now, how do we think about such cases? आप देखिए हमने ग्राफ कौन सा बनाया हुआ है? ग्राफ आपने कौन सा बनाया हुआ है? ये 1 over 2x squared plus 3x. This is the graph that you have. क्या आपके पास ऑलरेडी वो इस इक्वेशन में कहीं पर आ रहे हैं? Yes, we have that on the left side here. This is y, right? This is our y. उस साइड पे क्या आ गया? 2. इसका मतलब है हमें कौन सी लाइन चाहिए? y equals 2 on the graph. तो ये ग्राफ कब जो है वो y equals 2 के इक्वल है. y equals 2 लाइन कहाँ पर होगी ग्राफ के ऊपर? This is the y equals 2 लाइन. ये कहाँ पे कट कर रही है ग्राफ को? एक पॉइंट के ऊपर. This is that point. And this is minus 0.4 on the x-axis. That's what you write here. So this is minus 0.4. Okay. Now in the second part, it says, by drawing a suitable line on the grid, estimate the solutions of this equation. Now this is slightly more tricky. Remember the curve that you have initially? Y equals 1 over 2x squared plus 3x. And we need to use that curve to solve this equation. 1 over 2x squared equals 7 minus 4x. Now, the trick in such questions is that you want exactly this thing on one side of this equation. किसी भी एक साइड पर आपको exactly ये वाली चीज चाहिए. क्या चाहिए? 1 over 2x squared plus 3x. Now, on the left side here, you have 1 over 2x squared. इसमें क्या करना पड़ेगा आपको? आपको 3x जो है वो ऐड करना पड़ेगा to get this equation. फिर आप ग्राफ को यूज कर सकते हैं. तो हम क्या करते हैं यहाँ पे? हम कहते हैं let's add 3x to both sides of this equation. कहते हैं 1 over 2x squared plus 3x. लेफ्ट साइड में भी 3x ऐड कर दिया. और उसको बैलेंस करने के लिए ऑफ कोर्स हम एक साइड पर तो सिर्फ ऐड नहीं कर सकते, राइट साइड पे भी 3x ऐड कर लेते हैं. ये क्या हो जाएगा? 7 minus 4x plus 3x. हमने दोनों साइड्स के ऊपर इस इक्वेशन में 3x ऐड कर दिया. Now, what do we have on the left side? On the left side, this is exactly what y was, right? यही तो हमने ऊपर कर्व बनाई है ऊपर. हम क्या कर सकते हैं? हम कहते हैं इसकी जगह पे y लिख लें. Okay? Right side पे क्या आ गया आपके पास? 7 minus 4x plus 3x. What is that? That is 7 minus x. This is the line that we have to draw in this graph. जिसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है इस कर्व के साथ हमें देगा कि क्या सॉल्यूशंस आते हैं. 7 minus x. ये वाली लाइन वहां पे ड्रॉ करनी है. इट्स अ स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं? वी टेक एनी टू पॉइंट्स एंड देन जॉइन देम. x की वैल्यू को यहाँ पे 0 इनपुट कर दें फॉर इंस्टेंस. सो दिस इज y equals 7 minus x. इसमें अगर x की वैल्यू 0 इनपुट करें, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ y दैट वी गेट? 7. x equals 0 पे y 7 होता है. इसमें ये पॉइंट आ गया हमारे पास. ठीक है. और हम क्या कर सकते हैं? अगर हम y को 0 इनपुट कर दें तो x 7 आता है, लेकिन वो ग्राफ पे नहीं आएगा. ग्राफ में x की वैल्यू 7 तक नहीं जा रही है, तो आप कोई और वैल्यू ले लेते हैं. हम x की वैल्यू लेट्स से 3 इनपुट कर दें, राइट? बिकॉज हॉरिजॉन्टली देखें 3 इज द मैक्सिमम वैल्यू दैट यू हैव हियर. 3 इनपुट कर दें तो उस पे y क्या आता है? y की वैल्यू 4 आती है. सो दिस इज द अदर पॉइंट दैट वी गेट. ठीक है. ये दो पॉइंट्स आ गए, इनको ज्वाइन कर दें. ये आपकी लाइन होगी. फिर हम देखते हैं उसके पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन क्या बनते हैं उसके साथ. Oops, sorry about that.
Okay, so this is what it's going to look like. ऐसा run करता है, line draw करते हुए. Okay, yeah. So this is the line that we have. Y equals 7 minus x. Now you just have to read the values where the graph intersects this line. कहाँ पे intersect कर रहा है. Let's mark those points. This is one point. ये नीचे x axis पे क्या आता है? This is the point that we're getting on the x axis, right? नीचे जाके देखें, ये point बनता है, ठीक है? ये point क्या हो जाएगा? This is minus 0.25, right? Minus 0.2 और 0.3 के दरम्यान में हम क्या लिख देते हैं? Minus 0.25. That's the first answer that we get in. अच्छा, और क्या हो रहा है हमारे पास? ये दूसरे एक और point of intersection आ रहा है ऑरेंज में. ये नीचे क्या बन रहा है? If we go all the way down here, this is the point that I'm getting. This is 0.3. ये लिख देते हैं यहाँ पे. This is plus 0.3. And we have another point of intersection here, which is right here. ये नीचे क्या आता है? 1.7. These are the three solutions that we're getting here. Minus 0.25, plus 0.3, and 1.7. ये हमें तीन answers यहाँ पे लिखने थे. All right, let's move on. Question number 8. A is the point minus 2, 3. B is the point 4, 5. Find the coordinates of the midpoint of AB. Midpoint formula apply कर लें. x1 plus x2 over 2. यहाँ पे इसको हम कह देते हैं x1. Let's say this is x2. So this is x1, x2. Sorry, x1, y1. This is x2, y2. Midpoint कैसे आएगा? x1 plus x2, that's minus 2 plus 4 divided by 2. y1 plus y2, that's 3 plus 5 divided by 2. What does that give us? 2 over 2, that's 1, and 8 over 2, that's 4. Midpoint is 1 and 4. Okay, that was the first part. Let's look at the second one. It says, show that the equation of the line AB is 3y equals x plus 11. AB line की equation चाहिए. Line की equation के लिए एक चीज आपको चाहिए होती है, that is the gradient of the line. Let's figure that out first of all. y2 minus y1, that's 5 minus 3 over x2 minus x1. That's 4 minus minus 2. That's going to be 4 plus 2. That's 2 over 6, which is 1 over 3. That's the gradient that we're getting. Gradient आ गया. अब आपको इक्वेशन निकालनी है. y equals mx plus c यूज करना चाहते हैं, वो यूज कर लें. अगर आपकी दूसरी फॉर्म आती है, that's much quicker. I would recommend that you learn this form as well. It saves your time. Y minus y1 equals m into x minus x1. m की जगह पे ग्रेडियंट डाल दें. x1 y1 की जगह पे कोई भी एक पॉइंट डाल दें. पहला वाला डालना चाहे वो डाल दें, सेकंड वाला डालना चाहे वो डाल दें. दोनों में से कोई भी डाल सकते हैं. It doesn't matter. ठीक है. अच्छा, y1 क्या है? y1 is 3. Let's put that here. m is 1 over 3 into x minus x1. So that's going to become x minus minus 2, which is x plus 2. Simplify कर लें. 3 multiply कर दिया लेफ्ट साइड पे. 3y minus 9 equals x plus 2. उसमें जो फॉर्म चाहिए वो उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लें. 3y लेफ्ट पे रहने दें, बाकी सब कुछ राइट पे ले जाएं. So it's going to become 3y equals x plus 11. That is what we needed to prove here. आप y equals mx plus c से भी कर सकते हैं. We'll get the same result from that as well. Again, that's also okay. Part C, it says find the equation of the perpendicular bisector of line AB. Perpendicular bisector, ये क्या होता है? अगर एक पॉइंट हमारे पास A यहाँ पर है, एक पॉइंट B इधर है. Perpendicular bisector is the line that passes through the midpoint of AB and is perpendicular to AB like this. ये आपका perpendicular bisector है. अब midpoint हमने निकाला फर्स्ट पॉइंट में. midpoint क्या था? 1, 4. सी पॉइंट 1, 4 से पास करनी चाहिए लाइन. ठीक है. Let's call this line L. इसका gradient क्या होएगा? Gradient of the perpendicular bisector. जो AB का gradient है 1 over 3, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल. साइन चेंज करना है, रेसिप्रोकल ले लेना है. पॉजिटिव है ओरिजिनल ग्रेडियंट, उसको नेगेटिव कर देंगे.
साइन चेंज, और रेसिप्रोकल -3, ग्रेडियंट -3 है, एक पॉइंट हमें पता है, लेट्स कॉल दैट पॉइंट m पॉइंट इज 1 and 4, उस पॉइंट से ये लाइन पास करती है, आप इक्वेशन लिख सकते हैं इसकी, ग्रेडियंट भी पता है, एक पॉइंट भी पता है, अगेन y इक्वल्स mx प्लस c यूज कर लें इफ यू वांट, या फिर अगर आपको ये फॉर्म बता तो ये यूज कर लें, y minus y1 equals m into x minus x1, this is needed values, y minus 4, remember this is m, this is x1 y1, y minus 4 equals -3 into x minus 1, and that gives me y equals -3x plus 3 plus 4, which turns out to be y equals -3x plus 7. Let's just write that here. This is what we were looking for. Okay, this is the equation of the perpendicular bisector. Let's move on. Question number 9. We need to solve this equation. 3x equals 15, x equals 5. That's our result here. That's pretty straightforward. Inequality solve करनी है, 7x less than 3 into 2 is 6, minus 3x, then you have 10x less than 6, x less than 6 over 10, which is 3 over 5. This is our final result here. ये तो free के marks से दिए हुए यहाँ पे. Then we have to solve this equation. How do we do this? पहले LCM लेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे. लेफ्ट पे LCM ले लेते हैं. डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ये दोनों फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x minus 2 into x plus 5. In the numerator we have 3 into x plus 5 plus x into x minus 2, that equals 1. Multiply the denominator on the other side. On the left side we have 3 into x plus 15 in the numerator plus x squared minus 2x. Right, on the right side, it's 1 into x minus 2 into x plus 5, x into x, x क्या हो जाएगा, x squared minus 2x plus 5x minus 10. Take everything to the left side, x square get cancelled. 3x minus 2x, that's x. चलिए इसको लिख लेते हैं. 3x plus 15 plus x square minus 2x minus x squared plus 2x minus 5x plus 10 equals 0. X square and x square get cancelled. X वाली terms कौन सी हैं? 3x minus 2x, that's x. X plus 2x, ये दोनों in fact cancel हो गए in any case. And we have 3x minus 5x, that's minus 2x. And then the constants, 15 and 10, that's going to give us plus 25 equals 0. X equals 25 over 2, which is 12.5. And that is what we were looking for here. This is the value of x, 12.5. Okay. Part D. Now it says simplify this thing. Now how do we simplify this? We'll have to factorize and see कि कोई cancellation तो नहीं हो सकती है. Let's try this. Numerator को factorize हम कर सकते हैं. अगर हम x कॉमन लें फर्स्ट टू टर्म्स में से और x कॉमन लें दूसरी टर्म्स में से, y भी कॉमन आ सकता है वहां से. और न्यूमरेटर में हम क्या करते हैं, let's take x common from the first two terms and see what that gives us. 2x plus 3 inside, and then we can take 2 common here and also y common here. That leaves us with 2x plus 3 here as well. दोनों में सेम आ गया आपके ब्रैकेट के अंदर. डिनोमिनेटर को देखते हैं कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं. 2 into 12, that's 24. 24 के फैक्टर्स चाहिए जो ऐड होकर 11 आते हैं, 8 and 3. So we can say
2x square plus 8x plus 3x plus 12 मिड टर्म ब्रेक करके हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा, अब न्यूमरेटर में फैक्टराइजेशन फैक्टर्स क्या हो जाएंगे आपके, ये x and ये 2y, that's x plus 2y multiplied by 2x plus 3. In the denominator we have to take 2x common from the first two terms. That leaves us with x plus 4 inside, and then take 3 common from the next two terms. That leaves us with x plus 4 inside as well. And we get x plus 2y into 2x plus 3, and in the denominator we have 2x plus 3 multiplied by x plus 4. ये हमारी फैक्टराइजेशन होगी डिनोमिनेटर में भी। 2x plus 3 and 2x plus 3 get cancelled. And what are we left with? We are left with x plus 2y divided by x plus 4. This is what we had to do here. All right. ये हमारा फाइनल रिजल्ट है, हमने सिंप्लीफिकेशन कर ली इधर। रिमेंबर, इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको इक्वेशन नहीं बना देना, इसको खुद से जीरो से नहीं इक्वेट कर देना, इस तरह नहीं करना. So that's a common error that a lot of people do. And we don't have an equation here. It's just simplification of a fraction. Equation नहीं है ये, ठीक है? इसको बस simplify करना है. So let's move on. Question number 10. It says a cuboid measures 6.2 centimeters by 4.8 centimeters by 2.5 centimeters. Each measurement is given correct to the nearest millimeter. Calculate the upper bound of the surface area of the cuboid. Surface area of the cuboid. Surface area of cuboid क्या होता है? सारे जो faces हैं उनके areas को add करना है. इनके faces क्या होते हैं cuboid के? They're all rectangles, right? So आपको अगर surface area का formula याद है, you can do it like this: 2 into length into width, length into breadth plus length into height plus width into height, right? एक face और उसका opposite, तो वो 2 से multiply करना पड़ता है. फिर एक और face उसका opposite और एक और face उसका opposite. 6 faces in total. उन सब के basically areas को add करना होता है. We need the upper bound of the surface area. Upper bound of the surface area, इसका ये मतलब नहीं है कि आप पहले surface area निकाल लें और उसके बाद आप उसकी upper bound निकालें. आपको क्या करना है, पहले original lengths की upper bounds निकालनी है. 6.2 की upper bound, 4.8 की upper bound और 2.5 की upper bound, because measurement तो lengths की है. measurement आपने area की नहीं की है, measurement आपने lengths की है, और वो measurement जो हैं they are given correct to the nearest millimeter. Now we have to be a bit careful about the units here as well. So we are given lengths in centimeters. That's one thing. Each measurement is given correct to the nearest millimeter. Okay. और फिर जो फाइनल आंसर चाहिए हमें वो भी सेंटीमीटर में स्क्वायर में चाहिए. तो सब कुछ सेम यूनिट में होना चाहिए. फाइनल आंसर क्योंकि हमें सेंटीमीटर में चाहिए तो हम क्या करते हैं, हम इसको भी सेंटीमीटर में कर लेते हैं. मिलीमीटर कितना होता है? 1 centimeter has 10 millimeter. 1 millimeter is therefore 0.1 centimeter. तो हम ये कह सकते हैं कि the nearest millimeter जो लक्ष्य रखा हुआ है इसका मतलब है 0.1 सेंटीमीटर. टू द नियरेस्ट 0.1 सेंटीमीटर ये मेजरमेंट है. ओके, अब 0.1 सेंटीमीटर पे अगर ये मेजरमेंट है तो इसका क्या मतलब है? अपर बाउंड इन सारों की क्या होगी? रिमेंबर इसमें क्या करते थे, जो भी आपका ये नियरेस्ट के बाद रखा हुआ है आपने इसको 2 से डिवाइड करना है. 0.1 over 2, so basically that's 0.05. अपर बाउंड और लोअर बाउंड कैसे आएंगी? प्लस 0.05 करने से अपर बाउंड आएगी और माइनस 0.05 करने से लोअर बाउंड आएगी. तो इन सब की अपर बाउंड्स क्या आती हैं आपके पास? बिकॉज देखें सब कुछ न्यूमरेटर में ना, यहाँ पे सब कुछ आपने मल्टीप्लायर ऐड करना है, तो आपको सबकी अपर बाउंड ही चाहिए. 6.2 की अपर बाउंड क्या होगी? 6.2 plus 0.05, that's going to be 6.25. We're talking about upper bounds here.
ओरिजिनल लेंथ 6.25, इसकी क्या होगी 4.85, और लास्ट वाले की क्या हो जाएगी 2.55। ठीक हो गया। इन सबको इनपुट कर दें फॉर्मूला के अंदर एंड विल गेट योर रिजल्ट। 2 into 6.2 into, sorry, 6.25 into 4.8 plus 6.25 into 2.5, I'm sorry, थोड़ा सा केयरफुल रहना, केयरलेस एरर्स नहीं करने। 4.85 यहाँ पे आएगा प्लस 6.25 multiplied by 2.55 plus 4.85 multiplied by 2.55। ये पूरा evaluate कर लेने के पास क्या आता है 6.25 into 4.85 plus 6.25 into 2.55 plus 4.85 into 2.55, and then whole thing multiplied by 2, and that's giving me 117.235. That's the upper bound that we have. इसने राउंड ऑफ करने के लिए नहीं कहा हुआ, या बेशक पूरा लिख के आ जाए, that's okay. ठीक है, that's the upper bound of the surface area of this cuboid. In fact, यहाँ पे आप पूरा ही लिखेंगे because उसने upper bound पूछा, तो maximum value जो है वो ये हो सकती है. You have to write this in full like this. Now it says a volume of pyramid is given like this. Okay, the diagram shows a square-based pyramid A, B, C, D, E. Vertex E is vertically above X, the center of the square base. The height of the pyramid EX is 17 and EC is 19. Okay, show that the length of the base is 12 centimeters. Okay, so how do we think about this? Let's figure this out. Remember, जब आपके पास 3D figures होती हैं, अगर कोई भी side एक vertical है, for example, in this case, EX is a vertical side. EX is vertical. इसके जो angles बन रहे होंगे horizontal के साथ, इसके जो angles बन रहे होंगे horizontal के साथ, ये सारे 90 degrees हैं. ये एंगल सी के साथ भी 90 है, डी के साथ भी 90 है, ए के साथ भी 90 है, बी के साथ भी 90 है. ऑल ऑफ दीज एंगल्स आर 90 डिग्रीज. ओके, एक्स पे जितने भी एंगल्स बन रहे हैं वो 90 बन रहे हैं ई एक्स के साथ. ओके, लेंथ ऑफ बेस हमें शो करनी है. फॉर एग्जांपल, सो बेसिकली हमें कोई भी लेंथ निकालनी है. लेट्स से बीसी, लेट्स कॉल दिस एक्स. ये भी एक्स है, ये डीसी भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये एक्स है. स्क्वायर बेस है ना, तो कोई भी एक लेंथ आप निकाल लीजिए. ये एक्स हमको फिगर आउट करना है समझिए. Now, how do you figure that out? What we can do is we can say, let's start with this right angle triangle, EXC. ये triangle हम देखते हैं. It's a right angle triangle, right? Because जो X पे angle बन रहा है इस triangle के अंदर, that is 90 degrees. This angle is 90 because EX is vertical. So let's write that down here. EXC. ये triangle हम use कर रहे हैं. It's a right angle triangle. We can find the length XC from this. How do you do that? 19 squared. हम Pythagoras use करें. 19 squared. That's hypotenuse का square is equal to 17 squared plus XC का square. And we can find the length of XC from this. XC square क्या आएगा पहले वो लिख लेते हैं. 19 squared minus 17 squared. That is 72. Okay, so XC therefore is square root of this. Let's keep it in exact form for now. Okay, ये final answer नहीं है, इसको इस तरह रहने देते हैं. Square root of 72. That's the length XC. अब इसको यूज करके हम किसी तरह से BC निकाल सकते हैं. What we can do is we can think of this bigger triangle now. So think of this triangle ABC. ABC triangle का सोचा. Let me write that on the side here. Triangle ABC. Let's think about this now. Remember, this is also a 90 degrees triangle. Why? Because it's a square base. ये जो angles बन रहे हैं यहाँ पे A, B, C और D पे horizontally, they're all 90 degrees. Okay.
हाँ दानियाल, are your papers, are your A-level papers finished? ABC, okay. ABC ट्रायंगल आपके पास है, ठीक है। it's a 90 डिग्री ट्रायंगल। हम क्या करते हैं, AC लेंथ निकाल लेते हैं पहले। AC लेंथ निकाल सकते हैं, AC is just 2 times this, right? So the length AC is 2 into square root of 72. Yeah, basic decimal में लिखना, that's also fine, कोई मसला नहीं है। But that's the length AC, right? It's 2 times XC because X was the midpoint. So ये total length आपके पास 2 into square root of 72 हो जाएगी। What about X now? So we have a triangle like this. इसको triangle को मैं यहाँ पे अगर साइड पे बनाऊं, ये लेंथ X है, ये लेंथ X है, और ये लेंथ कितनी है? 2 square root of 72. We can find the length of X here. We can use Pythagoras here again. We can say X squared plus X squared should equal 2 into square root of 72 का whole squared. And that should give you the value for X. On the left side, we have 2x squared. On the right side, we get 4 into 72. Let's evaluate that on our calculator. That is 288. X squared turns out to be 144. Take square root of that, and that gives you 12. It's a length, something positive answer लिखेंगे. X की value हमारे पास यहाँ से क्या आ गई? 12 आ गई. That is what we had to show. Okay. All right. Right, Daniel. It's okay. Hopefully, कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। Let's hope for the best. जो आपने कंट्रोल में था आपने तो वो किया, जो कैंसिल हो गया उनका तो कुछ नहीं कर सकते। अभी इसी वीक में कोई अपडेट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन उन्होंने बताया नहीं अभी तक क्या करेंगे। A2 के तो सारे पेपर्स आपको कैंसिल हो गए। Let's see what they're going to do now. Okay, part 2. Calculate the volume of the pyramid. Volume of pyramid, उसने फॉर्मूला यहाँ पे दिया भी हुआ है आपको, 1/3 into base area into height, right? Do we have the base area? The base is a square. X की वैल्यू में पता चल गई है 12 है। 1/3 into base area. Base area कितना आएगा? 12 into 12, right? Square का area कितना होता है? Side and the side का square. Into height. What is the vertical height? EX. That is 17. 17 से multiply कर दो. Formula में सब values input करनी है. That gives you the result. Let's see what this turns out to be. 144 divided by 3 into 17. That's 816. This is the volume of the pyramid. And then finally, we have to calculate the angle CBE. CBE. All right. So we're looking for this angle. ये angle चाहिए। अब इसका आसान तरीका क्या है, इसका ट्रायंगल को ना अलग से बना लेते हैं यहाँ पे। This is what the triangle looks like. E जो है वो ऊपर पॉइंट है एक, और नीचे हमारे पास एक B और एक C है। This is the angle that we're looking for. Let's call this angle theta. EC length पता है, that's 19. Now think about it. If EC is 19, the other length EB is also 19, right? Because दोनों slant height है और ये स्क्वायर बेस है, तो बिल्कुल सेंटर से आपका वो ऊपर लेंथ जा रही है, तो इट्स अ सिमेट्रिकल फिगर इन अ सेंस। तो EC की लेंथ है वही EB की लेंथ है। तो ये जो ट्रायंगल आपकी बनती है, इट्स एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट? It's an isosceles triangle like this. We know the length of BC as well. BC की length कितनी है? That is 12. That was the side of the square. 3 sides पता है? Angle निकाल लें, आप cosine rule use कर सकते हैं. That's one idea. That will give you the direct result directly. That's one possibility. Another possibility, since it's an isosceles triangle, अब इस triangle को break भी कर सकते हैं इस तरह से 2 parts में. You can say, let's break it down like this into 2 parts. ये एक right angle triangle बन जाएगी. उससे बहुत जल्दी निकल आएगा, कोसाइन रूल यूज नहीं करना पड़ेगा आपको उसके लिए। पे अगर ये टोटल लेंथ नीचे 12 है, दिस कंप्लीट लेंथ इज 12,
this half length is going to be just 6. If you call this point something, it's called this x. ये length कितनी है? bx, it's just 6. In fact, x को हमको use किया हुआ है. Let's call this something else. Let's call this m. तो अगर हम ये वाली triangle use कर लें अब, ये वाली triangle, it's a right angle triangle. This is a right angle triangle. इसको use करके हम angle theta निकाल सकते हैं. थीटा के परस्पेक्टिव से 6 is the base, 19 is the hypotenuse. Base और hypotenuse में कौन सी रेशियो होती है? Cos, we can say cos theta is equal to adjacent, which is 6, over hypotenuse, which is 19. Right angle triangle के अंदर हम ये वाली रेशियो डायरेक्टली इस तरह से यूज कर सकते हैं. Just find cos inverse of that and see what that gives you. Cos inverse of 6 over 19. That is giving me 71.59. So you can say that's 71.6 degrees, and that's your final answer. All right. And that's it. That completes our paper. I hope that was helpful. If you found this helpful, make sure that you leave a like there and also subscribe to the channel for more helpful content. You can also find a lot of other useful videos in the description below. For example, you'll find a lot of other solved past papers in the playlist named yearly past papers नीचे. आपके पास फिर बहुत सारे जो major topics हैं O levels के, उनके ऊपर detailed videos भी हैं along with their topical past paper practice. You can also have a look at that if you want. So you have transformations, vectors, probability, sequences, trigonometry, graphs of functions, mensuration, and so on. You have all of that covered. Have a look at that. You find that useful. Okay. I'll see you in the next video then. Allah Hafiz.